Hi students, today we are going to start a new chapter alcohol, phenol and ethers. So let me introduce with the chapter. This chapter is very important because alcohol functional group OH is present in our daily life, present in sugar, in fabrics, in solvents, in wood polish. In our daily life it is relevant to us. So what is alcohol? So first, whenever hydrogen from a hydrocarbon, this is hydrocarbon, so one or more hydrogen from hydrocarbon is replaced with OH group. So this hydrogen is replaced means H minus and OH plus कर दिया, it becomes alcohol. So alcohols have OH functional group. Now what is phenol? Phenol, when aromatic hydrocarbon. See, basic aromatic hydrocarbon is a benzene. This is benzene. So one or more or all these H are replaced with OH. It becomes aromatic hydrocarbon, phenol will be formed. So from aromatic hydrocarbon phenol is formed, and from aliphatic hydrocarbon alcohol is formed. Now ether, how ether is formed? From aliphatic hydrocarbon or aromatic hydrocarbon, one or more hydrogen is replaced with OR group or OAR group. यहाँ OR होता है alkoxy group and OAR होता है phenoxy group. Okay, so when one or more hydrogen is replaced with OR, then it becomes ether, or OAR से replace हो तब भी ether. Okay, now what is R? R is here alkyl group. What is alkyl group? Alkyl group, when one hydrogen is removed from a hydrocarbon, hydrocarbon से एक hydrogen हम हटा दें, then we get alkyl group. There are different types of alkyl groups, very important for you in all chapters. This one is methyl, CH3, C2S5, this is ethyl, isopropyl, which is secondary, and ethyl is primary, and tertiary butyl यहाँ पे कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से बॉन्डेड है दिस कार्बन, सो इट्स डिग्री इज टर्शियरी. सो टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, इथाइल एंड मिथाइल, दीज आर एल्काइल ग्रुप्स. सो आर की जगह है ये. हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. सी, from aliphatic hydrocarbons. Aliphatic means they are not aromatic. They may be straight, may be branched, or may be cyclic, but not like benzene. Benzene is aromatic. So from aliphatic hydrocarbon is written in this form. When one H or one or more H is replaced with OH, then we get ROH. Okay, ROH is representation of alcohol. Okay, R is alkyl group and OH is hydroxyl group. It is functional group of alcohol. Name is hydroxyl group, OH group. R is alkyl group. Now from aromatic hydrocarbon, typical aromatic hydrocarbon or basic aromatic hydrocarbon is a benzene. So benzene is represented by AR, or it is known as aryl group. So from AR or H, we replace one or more hydrogen by OH. जब इसके H को हटा के हम OH लगा दें, then we get phenol. Okay, hydroxyl group लगा दें H को हटा के, then we get the phenol. Now ether, what is ether? So see the introduction of ether, how ether is formed from hydrocarbon. See, hydrocarbon is a basic compound and we get all other compounds from hydrocarbons. So when we replace this H, one or more H is replaced with alkoxy group, OR group. OR is a alkoxy group. इसके एग्जाम्पल होते हैं मिथॉक्सी. जब यहाँ पे R की जगह CH3 होगा तो ये हो गया मिथॉक्सी, और R की जगह है C2S5 हो तब ये हो गया इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, butoxy, phenoxy, these are alkoxy groups.
So when H is replaced by OR group, alkoxy group, we get ether. See, H हट गया, OR जुड़ गया, तो ROR, it is representation of ether. When H is replaced by OAR means O और AR होता है फिनोल, बेंजीन. सो इससे रिप्लेस हो जाए H, देन बन जाएगा R और O और बेंजीन, RO और बेंजीन. इट इज ऑल्सो ईथर. नाउ क्लासिफिकेशन. हाउ टू क्लासिफाई alcohols? See the classification, very important. By knowing the classification, we can solve the questions also, and questions are also based on classifications. So classify according to OH groups. Number of OH groups. When one OH group is present, it is called monohydric. Hydric means OH group. 2 OH groups, dihydric. 3 trihydric. So here one OH is present, it is ethanol. Here 2 OH groups are present, so it is glycol, name is ethane 1,2-diol. This is 2 hydroxyl groups, so dihydric. Here 3 hydroxyl groups are present, replacing 3 hydrogens, one from here, one from here, and one from here. Its name is glycerol. So this is trihydric alcohol, dihydric alcohol, and monohydric alcohol. Similarly, when we replace one or more hydrogen from a benzene ring, when one hydrogen is replaced with OH, then it is phenol. 2 hydrogen can be replaced, and 3 can be replaced, 4 can be replaced, 5 can be replaced. If 2 are replaced, it is dihydric. 3 are replaced, then trihydric. Now classification of monohydric alcohols. हमारे इंपॉर्टेंट है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, उन्हीं के रिएक्शंस हैं, उन्हीं के प्रॉपर्टीज है, प्रिपरेशन है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की. सो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मीन्स 1 OH ग्रुप इज प्रेजेंट. ये ध्यान में रखना है हमें, 1 OH ग्रुप. सी हाउ टू क्लासीफाई देम. फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कंपाउंड्स हैविंग COH, और यहाँ पर जो ये C है, जिस कार्बन से OH बॉन्डेड है, दैट कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड. sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए. सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाले कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे? देखिए इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं. यानी इनका क्लासिफिकेशन था, ये कार्बन होना चाहिए, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो वो होना चाहिए sp3. सो ये कार्बन देखिए sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन, और ये फर्दर एक कार्बन से जुड़ा हो तब इसको बोलेंगे प्राइमरी. OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी. इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बिकॉज कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं. 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सो ये टर्शियरी हो गया. सो हमें देखना है कार्बन. ओके, सो वी हैव टू सी ओनली कार्बन एटम.